am going for a family vacation, and guys, this video is all about how I pack. And you know what? I'm packing for myself, I'm packing for my daughter, and I'm going to show you all the Amazon essential that I get for travel, like all of these, like a packing cubes, shoe organizing stuff, how to pack for a baby, all the essential bags, diaper bags, everything. This video is going to be massive and very useful, I'm sure, and I'll give you all the links in the description. So without a further ado, let's get into the video because I'm really excited क्योंकि ना इतने अच्छे से मैंने कभी पहले ऑर्गेनाइज नहीं करा है ट्रैवल के लिए. उप्स, bags भी यहाँ पे रखे हुए हैं. But anyways, so all of this I have laid out everything so I can show you guys and I can give you a proper valuable content through this video. So चलो बहुत नहीं बोलते हैं, let's go and start packing. But packing करने से पहले I'll show you each product that I got it from Amazon and I'll give you all the links in the description. You can go and check it out. Let's get into the video now. All right, so सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ packing cubes that I got on Amazon. I got in two different shades and design. Why? Because एक में मैं अपनी बेबी गर्ल का रखने वाली, एक में मैं अपना रखने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा रहेगा कि हाँ सब कुछ segregated है and it's easier to find as well. इसके अंदर आता है और 5 पैकेट्स, तो टोटल मिला के आता है set of 6. And I really love the quality as well because it's transparent. You can see कि इसमें क्या रखा हुआ है. There's so many other colors variety on Amazon, but this one I really like. So ये 3 pouches you will get in this, and then you will get another 3 pouches like this. तो ये वाला स्पेशली कपड़े रखने के लिए होता है और ये ट्रांसपेरेंट सा भी होता है, सो यू कैन सी एवरीथिंग आपने क्या रखा हुआ है. सो सेम थिंग इसमें भी वैसा ही है. लेट मी ओपन एंड शो यू गाइस. ये वाला चीज़ ना बहुत एसेंशियल होता है यार. मतलब आई डोंट नो विदाउट दिस मैं कैसे ट्रैवल कर रही थी. आई हैव नो आइडिया. सब मैं आई थिंक बैग में से डंप करके जा रही थी और बहुत सारे कपड़े, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो द नंबर 1 टिप दैट आई वांट टू गिव यू गाइज इज you have to lay out everything in the bed and you actually see कितने कपड़े हो रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रहे. You take whatever you actually need and I have laid out everything. I did it for the first time and this is super, useful. It's super useful. I think I will do it more. So इसके अंदर आता है again 3 pouches and फिर इसके अंदर भी आता है ऐसे वाले 3 pouches. Okay, so next product that I would show you is the backpack that I got it on Amazon. It's from the brand called Zoop, but this is the best bag I've ever purchased. मैंने ये पिछले vlog में भी दिखाया जब ये मुझे डिलीवर हुआ था. It has so many pockets which I absolutely love it. सबसे पहला ये जो यहाँ पे ऐसे रखने वाली, this is wider, तो ना ये कंधे पे दर्द नहीं होगा, अच्छे से आपका मतलब बैग का लोड कैरी कर पाओगे. नंबर 1, इसके पीछे ना यू हैव दिस लैपटॉप रखने के लिए सारा एसेंशियल दैट आई नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ गैजेट्स बिकॉज आई विल बी व्लॉगिंग. एंड देन दिस इज द मेन सेक्शन. लुक एट द स्पेस, और उसके अंदर भी बहुत सारे चेन्स वगैरह बने हुए हैं. दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. And then you have a section here, you have a section here. It's a huge bag, but it is so beautiful as well. Look at that. It comes in so many other colors and designs as well. I love Zook. I've been loving Zook a lot. It's affordable, the quality is super nice, and they make the bag very thoughtful, very, I think this is just on point. I have no words for Zook because they make the bag super, customer को सोच के बनाते हैं. I think that's the selling point. Then secondly, I got the diaper bag. Again, I got it from Amazon. And then this is from the brand called R for Rabbit. It's a really good brand. इसमें एक कलर और था, पिंक कलर, बेबी पिंक कलर, but I got this one. Okay, so यहाँ पे ना wipes रखने के लिए बना, easy just to open it and you can just take the wipe out when you're traveling. And also you can actually keep the bottle here. It has a space. Let me open and show you guys. बहुत space है. Look at the massive space. Oh God, look at it. Look at this. And I'll show you the best part.
This also has a mat. Look at that. It is actually a diaper changing pad, but my daughter is 3 years old. She doesn't need this anymore. I don't know how I'm going to use this, but I'm going to keep it in case I need it while traveling, because again, with baby, you don't know what is actually needed. So it has a ton of space inside. यहाँ पे सारे bottles वगैरह सब रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो. इसके अंदर भी और pockets बनी हुई है. So, and you can carry it like this also. If you want, you can carry it like this also, which is super nice. Yeah, this is also very thoughtful bag. And when I was buying all of this, मैं बहुत सोच के खरीदी सारा कुछ कि अगर मैं एक बार इन्वेस्ट करूँगी तो मैं अच्छे से इन्वेस्ट करूँगी. So I was like कि मेरी क्या नीड्स है, and I travel so much, so मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ता है. So all of this keeping in mind, I bought this stuff. और okay. So now I also have this shoe organizer again from Amazon. So there are so many colors also available. So I'm going to keep my shoes like this. So this is how I'm going to keep it. You can actually see कि इसमें क्या shoes रखा हुआ है. This is super easy to, you know, carry it as well while traveling. So ऐसे इसको open कर सकते हैं. इसके अंदर shoes रखो and all sorted. Another one is this, another toiletry bag. And I've been using this bag a lot. So you can open it like this. You can hang it. It comes with a hanger. And again, it has a lot of pockets. So मुझे ना बड़ा होता है travel में कि should be compact but should have lots of pocket. I can keep lots of stuff and all of that. So look at it. It has literally so much space. यहाँ भी है, ऊपर में भी है, इधर भी रखने के लिए है. So much space. And इसमें भी again बहुत सारी colors variety available हैं. But I really like this one. Look at the print. It's so nice. So yeah, let me show you the another product. Are these pouches. Okay, I'm a big fan of pouches because छोटी-छोटी चीज़ें बहुत होती है travel में रखने के लिए. This is a pack of 3 and look at the material. ये कपड़े का बना हुआ है. Very thoughtful again. And देखो, ये थोड़ा बड़ा size, उससे छोटा and छोटू. Look at it. You can keep it in your luggage. नहीं तो अपने पर्स में भी रख सकते हो according to your needs. But this is so nice. I'll open it and show you guys as well. See, अंदर में ऐसे प्लास्टिक लगा हुआ है so that अगर कुछ लीकेज वगैरह होता है तो आपके लगेज में और जगह नहीं फैलेगा. So I think this is very thoughtful again. और इसके अंदर भी ना ऐसे ऐसे छोटा-छोटा pouches बने हुए हैं that you can see. You can keep your little stuff. So yes, I really like this. Let me show you the another color. Look, so pretty. Really pretty, dude. I mean, again, this is a set of 3. So good. I love the material. Yaar, material is pretty nice. Okay. The next up is this. Okay. I know many of you won't agree with this product because I don't know whether you guys use it or not, but I often use it. I keep a lot of stuff in this. I keep my creams, I keep my hair serum and all of that. But it also depends. अगर मेरा hair serum का packet छोटा है, for example, अगर ये इतने बड़े bottle में मेरा hair serum है, तो I will definitely not carry this entire bottle. I'll do transfer in this. For example, my night retinol serum, if ये इतना छोटा है, I can carry it like this. I don't need to keep it in this one. So it's so like, you know, optional कि आप किस में क्या रखना चाहते हो. If you just want to carry the entire bottle, definitely go for it. But I do not want to carry so much. So yeah. And let me, इसमें भी ना बहुत सारे अलग अलग types के varieties available हैं Amazon पे again. Let me open and show you guys too. So this comes in like this bottle, very sleek bottle. So इसमें आपको ऐसे spray करने वाला भी है. You also get like this pump करने के लिए भी है. So I generally carry my body wash in this क्योंकि इतना काम हो जाता है यार. And then you also have, so you also get this, and इसमें ना मैं generally अपना face cream या sunscreen ऐसे रखती हूँ छोटा सा, and this is good enough. So this is useful. Okay, then I found this from the local shop.
This is like bamboo का बना हुआ है ये, and you can open it like this. So I generally keep my brush in this because I do not want to keep my brush anywhere else. I really wanted to keep it very, clean and hygiene का सोच के I got this, and bamboo is actually good. So yeah, I'll carry my end. So I'll carry मेरा brush और मेरी बेटी का brush इसमें, and this is beautiful again. And then I will be, and next up I will be carrying this bag that I got it from, I think I got from Metro. Yes, this is from Metro. So I'm gonna carry this chotu pouch or bag, whatever you can call it, like this. So boarding pass, my phone, anything like a quick access करने वाली चीज़ें, so I'll keep it like this. So yeah, I'm gonna carry this bag too. Okay, let me show you guys this. So ये सारा पाउच भर के रखा हुआ है. In case I need, I will use it or else not needed because मैंने already निकाल लिया है बाहर जो भी मुझे ज़रूरत है. So I don't think so इसकी ज़रूरत पड़ेगी. But you never know while you pack, तब समझ में आता है कि अच्छा हाँ मुझे ये भी चाहिए या वो भी चाहिए. So I've kept it this as an option in case I need. So इसको रख देते हैं. Okay. So I'm carrying one छोटू luggage for my daughter. And I'm carrying one big luggage for myself. I think ये काफ़ी है और नहीं चाहिए. So my husband will pack for himself, so I don't have to be worried about that. I just need to pack for myself and for my baby. तो चलो, let's get into packing because I have to show you guys कि मैं actually pack कैसे कर रही हूँ, so that's easier for you to actually get an idea. And yeah, let's go. राइट, सो आई एम ऑल सेट. मैं 3 दिन बाद ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मैंने 3 दिन पहले अपनी पैकिंग की है. ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक
पैकिंग है, टॉयलेटरीज और वो सारी चीज़ें मैं लास्ट मिनट रखूँगी। तो मुझे ऐसा है कि अभी मेरा ये सब बेसिक पैक हो गया है, अब मुझे उतना टेंशन नहीं है। बस निकलने से आई थिंक 5 आवर्स पहले जो भी बचा कुचा है पैकिंग करने का, दैट आई विल फिनिश इट ऑफ एंड आई विल कैरी द फूड, ऑल ऑफ दैट आई विल डू लेटर। बट ये अब मेरा सॉर्ट हो चुका है, आई एम टेंशन फ्री। सो आई थिंक एंड आई वुड नॉट थिंक लाइक आई लिटरली वांट टू सजेस्ट यू गाइस कि 2-3 दिन पहले अपनी बेसिक पैकिंग कर लो, सो द लास्ट मिनट यू डोंट हैव टू वरी। ऐसा भी होता है ना कि अगर मान लो कि अभी आप पैक करो, कुछ ज़्यादा करिए, आपके पास ये नहीं है, आपको खरीदना है वो सारी चीज़ वट, तो वो सब ना आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी वरी एंड नॉट, आप परेशान भी नहीं होगे। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड. Actually, honestly, this is what I have learned from my in-laws. I used to not do all of this. I used to pack everything in the last minute. I've seen my in-laws packing so smartly. So that's the only reason I have, learned from them. Is like, ये तो बहुत ही मतलब टेंशन नहीं है यार, उतना आराम से you can pack your stuff and you are all set to go. और इतना परेशानी भी नहीं कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा and all of that. So I think I am done. I'll give you the closure look now. कैन सी ये सब कुछ सेट हो चुका है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया है सब कुछ। सो यहाँ पे मेरा सामान है, यहाँ पे मेरी बेटी का सामान है एंड दैट डाइपर बैग एंड माई बैकपैक एंड आई थिंक आई एम ऑल सॉर्टेड। दिस लुक्स सो गुड एंड ऑर्गेनाइज्ड यार। अगर मुझे कोई कपड़े निकालने हो ना तो मैं ऐसे करके निकाल सकती हूँ, मुझे पूरे कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दिस क्यूब इज़ सुपर यूजफुल। सो yeah, look at that smart packing. So this is the end of the vlog. I am all set to travel and it's been really long that I have traveled like this. So this is a family trip. Hopefully I'll show you the next vlog, full travel and full masti and everything. So stay tuned with me. So bye bye, we'll see you in the next vlog. Don't forget to subscribe and follow for more. See ya.